हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मैं हूँ रीना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और शाम को हम कुछ ऐसा बनाकर खाना चाहते हैं जो कि झटपट बन जाए और हेल्दी भी हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी। अगर आप चाहें तो नवरात्रों में साबूदाना को सोख करके फ्रिज में भी एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, जितना हमने साबूदाना लिया है उसका आधा पानी लें साबूदाना को सोख करने के लिए, और 3 से 4 घंटे सोख करने के बाद इसे फ्रिज में हफ्ते भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, जिससे कि जब आपका मन हो आप साबूदाना की खिचड़ी, चीला या फिर खीर बनाकर खा सकते हैं। तो आइए साबूदाना की खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। These bananas make it hurt. These bananas make it hurt. These bananas make it hurt.